Has anyone got an answer till now? Yeah. Okay, आपको फर्स्ट का आंसर मिल गया? Yes. Okay, you can either you can type it out in the chat box if you want. Perfect. Perfect answer. Yani has given the perfect answer. किसी और को मिला? Around 6 participants. Good. Anyone else? Good. So मतलब आपको मिल तो गया राइट कि क्या कहना चाह रहा है ये? Yes. Okay, that's what I wanted. So let's continue. Abhi nahi, but after this class, you can try encrypting this message. Okay, you can try encrypting this message and you can send it on WhatsApp, or you can send it via mail if you want. Okay. Okay, so अब तक तो सब कुछ क्लियर हो चुका है. Okay, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. Is there any doubt by anyone? No. Okay, so let's go ahead. Okay, so let's see at the first cipher. Okay, the cipher is this मतलब ये जो algorithm हम use करते हैं ना encryption के लिए, उसको हम cipher कहते हैं. Okay, so let's look at the first cipher or the Caesar cipher. Okay, now why I have told the roots that are the Caesar cipher? The reason behind this is because कि Caesar cipher है सबसे oldest cipher. सीजर साइफर से पहले कोई साइफर नहीं था. या जूलियस सीजर के बारे में सब लोग जानते हैं? Does everyone know about Julius Caesar? No. Okay, Julius Caesar was actually a king during, I think so he was a Greek king or a Roman king. I think so he was a Roman emperor. Okay, Julius Caesar was a Roman emperor, and there was also like this huge poem written on him. Brutus और Caesar के बारे में एक poem थी पूरी. Mark Antony. I think so if you would have heard about it, I don't know. But he was a Roman king. और wars के टाइम पे वो क्या करते थे कि अपने ऑफिशियल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए साइफर का यूज करते थे. Sorry. तो जस्ट इन केस अगर उनके दुश्मनों को वो मैसेज मिल भी जाता तो वो समझ नहीं पाते. ओके, तो उस तरह से वो लोग मतलब उस तरह से वो लोग शेयर करते थे साइफर को. So it was first introduced by Julius Caesar during wars.
to communicate important topics with his officials without giving away the information to his adversaries. It is simply a type of substitution cipher, that is, each letter of a given text is replaced by a letter, some fixed number of positions down the alphabet. The best example of the best example of Caesar cipher is कि जो मैंने लिखा ना, मैंने पता है ये वाले मैसेजेस भेजे थे दो. I'll just send them once again. ओके, ये जो चैट बॉक्स में मैंने दो मैसेजेस भेजे, वो याद है आपको कैसे मैंने डिराइव किया था एनक्रिप्टेड मैसेज? या हाँ, कैसे किया था, कैन यू टेल मी? जो भी लेटर था उसका नेक्स्ट लेटर लिख के। एग्जैक्टली, ओके. तो हर एक लेटर का मैंने नेक्स्ट लेटर जब पुट किया तब मुझे ये एनक्रिप्टेड मैसेज मिला. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीजार साइफर. उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक लेटर के बाद वाला या फिर उसके दो बाद, उसके तीन बाद जो लेटर आता है उसके साथ हम रिप्लेस कर देते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीजार साइफर, बट दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सीजार साइफर. आई विल सेंड इट टू यू. जस्ट अ सेकंड. जो ये मैंने दूसरा मैसेज भेजा ना अभी, कैन यू ऑल सी दैट मैसेज? हेलो. यस यस, यू कैन ऑल सी दैट मैसेज जो मैंने दूसरा मैसेज भेजा. ओके, ये मैसेज भी सीजार साइफर का ही एग्जांपल है. हाउ इज इट एन एग्जांपल ऑफ सीजार साइफर? क्योंकि मैंने पहले में क्या किया था कि उसके हर एक नेक्स्ट लेटर के साथ उसको एक्सचेंज कर दिया था. ओके, बट इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हर एक दो लेटर्स के बाद मैं उसको एक्सचेंज कर रहा हूँ. राइट? कैन यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, Jack, you can see H के बाद I आता है और I के बाद J आता है. So I have put over here J. E के बाद F और F के बाद G. So I have put over here G. Okay, so this is how I have derived this message. So that's also how Caesar cipher works. Caesar cipher works with a shift. Okay, तो इस केस में की क्या होगी? Can anyone tell me what is the key in this case? Hello, anyone? द शिफ्ट Perfect. The द shift would शिफ्ट be the key. The shift would be the key for us. Okay. Now I'll show you a website जहाँ पे आप सभी kind of ciphers को try out कर सकते हो. Just a minute. I think I'll have to reshare the screen. You all can visit this website. Okay. क्रिप्टूल ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है. आप सिर्फ क्रिप्टूल सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा. उसमें क्रिप्टूल ऑनलाइन पे जाना है. I'll show you instead of going directly to the URL. सिर्फ क्रिप्टूल सर्च करो. अरे यार मेरे में. ओके, इफ यू विल जस्ट सर्च फॉर क्रिप्टूल तो आपको ये मिलेगा गूगल सर्च पे. एंड यू कैन गो टू दिस www.cryptool.org और उसमें ये जो ग्रीन कलर की वेबसाइट है आप उस पे जा सकते हो. ओके, देन यू विल कम टू दिस काइंड ऑफ one website. Okay, here you can search for any kind of cipher that we are learning. तो मैं जैसे ही सीजार के बारे में सर्च करता हूँ, you can see over here I'm getting one example. I can choose it up, and here you can, what you can do is like here you can put in anything you want to encrypt. So can anyone give me a message that you want to encrypt? Hello.
Hello, anyone in the chat? You can send me a message that you want to encrypt. Okay, I'll just put in a message by myself. Okay, I got a message. Okay, I got a message. Thank you, Kaushik. So I'm putting in okay, this message, and so this is my ciphertext. Okay, you can see over here. This is the ciphertext. For you are a good teacher, I'm getting something like ZPV, BSFP, HPP. क्लियरली कोई भी आदमी अगर सबसे पहले ये साइफर टेक्स्ट को देखेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है. यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द की अमाउंट. ओके, एंड यू कैन सी कि हमेशा साइफर टेक्स्ट चेंज हो रहा है. You can always check out ki what the ciphertext means, or you can always confirm. Okay, so this website is actually really important, or it is really useful, or you can always use this website to check out any kind of cipher that you want. Okay, we will learn about various kinds of cipher, and I think so that we will be trying out each and every of this cipher on this website as well. So I hope so सबको सीजार cipher क्या है वो तो clear हो चुका है, right? Yes. Okay, thank you. So now let's see what is permutation and what is substitution. Okay. Does anyone know what is permutation? Permutation and combination वाला Exactly, वही वाला. तो आप कह सकते हो permutation क्या होता है? भूल गया है. Okay, permutation is basically किसी भी चीज को हम rearrange करते हैं ना, तो उसको permutation कहते हैं. Okay, it is like intermixing the order of the message. Here I have written it is the intermixing the order of the message to garble it. Okay. Here you can see कि मैंने एक टेक्स्ट लिया हुआ है वी आर लर्निंग एंक्रिप्शन और उसका एंक्रिप्टेड टेक्स्ट ये दिया हुआ है मैंने. सो दिस इज मेड यूजिंग परम्यूटेशन. अभी इसका फॉर्मूला लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स है तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज मेड यूजिंग परम्यूटेशन. आप इसमें ये चीज चेक जरूर कर सकते हो कि जो कोई भी लेटर्स इसमें मैंने यूज किए ना वी आर लर्निंग एंक्रिप्शन में, वो सारे लेटर्स हमारे एंक्रिप्टेड टेक्स्ट में भी रिपीट हो रहे हैं, राइट? यू कैन सी देयर इज अ W, okay, there is an E, there is a A, there is an R, there is also an E. तो आप देख सकते हो कि the each and every letter that I've used in plain text is being repeated in the encrypted text as well. तो किसी भी चीज का या किसी भी सेंटेंस को आप जब रीअरेंज करके प्रेजेंट करो तो वो हो जाता है एक परम्यूटेशन साइफर. इज इट क्लियर व्हाट इज अ परम्यूटेशन साइफर? Yes. Okay, Yes. good. And can anyone now tell me what is substitution? Hello. ओके, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि उसमें जैसे सीजार साइफर में हमने क्या किया कि हर एक जो लेटर था उसकी जगह पे हमने कुछ और डाल दिया. ओके, यूजिंग अ डेफिनेटिव नंबर ऑफ की हमने कुछ और डाल दिया. तो सीजार साइफर के अकॉर्डिंग जब मैं जाता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आता है, राइट? क्या होता है कि मैं हर एक लेटर को कुछ चीज से के साथ चेंज कर देता हूँ. तो इसमें क्या हो रहा था कि जो कुछ भी मैं प्लेन टेक्स्ट में यूज कर रहा था वो एंक्रिप्टेड टेक्स्ट या मेरे साइफर टेक्स्ट में भी रिपीट होगा, जबकि सब्स्टिट्यूशन साइफर में वो नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? हेलो. Yes. No. इफ Can यू you हैव अ repeat? डाउट इन सब्स्टिट्यूशन देन यू कैन आस्क मी. Can you just repeat it again? Okay, I'll repeat it again. As the name suggests, each member of the message is substituted using a predefined formula to garble it. आपको सीजार साइफर समझ में आ गया था कि क्या किया था हमने सीजार साइफर में? Yes. उसमें हम क्या कर रहे थे कि कोई भी जब हमारे पास लेटर हो तो हम उसको किसी चीज के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, हम किसी के साथ एक्सचेंज कर रहे थे, राइट? Yes. Yes, so that is substitution. When we are exchanging the letter with something else, then we create a substitution cipher. Okay, I hope now it is clear. Yes. Okay, let's go ahead. So this is an example I had taken for permutation versus substitution. इस रोबोट में आप ऐसा समझ लीजिए कि we have this three different things that we can attach in this robot. There's a chest, there's a toy gun, and there's this legs. So what you can do कि आप robot create कर सकते हो gun और legs के साथ, right?
You can create a robot with gun and chest. You can create a robot with chest and legs. या मतलब different kinds of stuff is possible. Different kinds of robots are possible. एक robot ऐसा भी possible है जिसमें सिर्फ chest है लेकिन guns या legs नहीं है. और एक robot ऐसा भी possible है जिसमें ये तीनों चीजें हैं. Right? Is it clear to all of you कि permutation क्या कह रहा है? Yeah. Yes. Okay, so there are different kinds of robots possible, and that is permutation. We are rearranging. And then there is substitution. आपने कभी ये गेम देखा हुआ है? बच्चों को देते हैं खेलने के लिए, where we give them Yes. blocks. Okay, and there are like this shapes carved in these blocks, and you put in the blocks. So what are we doing? That we are substituting the blocks for the shape, right? तो अगर मेरे पास स्क्वायर ब्लॉक होगा तो वो स्क्वायर शेप नहीं जाएगा. अगर मेरे पास सर्कल ब्लॉक होगा तो वो सर्कल शेप नहीं जाएगा. So we are substituting the blocks in place of shapes. You understand what I'm trying to tell? Hello. Yes. Okay, thank you. Yes. So this is the example between permutation and substitution. Let's go ahead. Let's take a look at the next cipher. Okay, the next cipher is a visionary cipher. Visionary cipher is a method of encrypting alphabetic text. It uses a simple form of polyalphabetic substitution. तो अभी हमने substitution तो देखा क्या होता है, polyalphabetic substitution क्या होता है. Instead of going through all of this theory, I will actually try to explain it you using an example, क्योंकि ये theory बहुत ही बेकार है, या theory is like very complex to understand. Just इतना याद रखना कि हमेशा visionary cipher में we would be using this table. Okay, is it clear that we will be using this table in visionary cipher? Just इतना अभी याद रखना. I will now show you. Everyone can see my screen, या अभी भी यही present PowerPoint ही दिख रहा है? No, we can see. No, we can see. You can see, right? So this is the visionary cipher I have taken. Okay. विजनरी साइफर में क्या होता है कि हमारे पास होता है एक मैसेज और एक की. ओके, आई विल टेक द मैसेज एज दिस इज विजनरी साइफर, एंड आई विल टेक द की. टेल मी सम रैंडम नेम, आई विल टेक दैट एज अ की. एनीवन? Kunj. Okay, I'll take that my name as the key. So my name is the key right now. Okay, so now what I will do कि मैं मैसेज को पूरा स्पेस हटा के लिख दूंगा. ओके, तो मैसेज क्या हो जाएगा, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ स्पेसेस हटा के. You understand how I've written the message? All I've done is just Yeah. remove these spaces over here. Okay, now what I will do, I will repeatedly write my name over this cipher. Okay, so my name is KUNJ. Here you can see कि मैंने अपना नाम repeatedly cipher के ऊपर लिख दिया है. Okay, और हमारे मैसेज के ऊपर लिख दिया है. Can you see? Yes. Yeah. Okay, now what we will do, we will now encrypt the message. Encrypt कैसे करना है, तो I've told you that we would be using this table, right? So what we will do, हम सबसे पहले हमारे की में क्या है, तो सबसे पहला लेटर है हमारे की में K. ओके, और इसमें क्या है सबसे पहला लेटर T. ओके, सो व्हाट वी विल डू कि हम इस टेबल में जाएंगे. वी विल लुक एट वेयर इज K. K इज ओवर हियर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम T में ढूंढेंगे. सो आई थिंक सो T इज ओवर हियर एंड K ये रहा. I guess D is the letter which is written over here, right? तो हमारे encrypted text में सबसे पहले आ जाता है D. Okay. Similarly, we will go on doing this. So next we have U and H. So over here is U and this is H. So it will come to be B. B press कर देंगे. Then we will look at N and I. So there is N and there is I, which tells me it is B. तो इस तरह से पूरा मैसेज को एंक्रिप्ट करेंगे. नाउ दिस वुड टेक एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं अभी यहाँ पे एंक्रिप्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल शो इट टू यू ऑन क्रिप्टल. ओके, विजनरी साइफर.
Okay, the plain text was this is visionary cipher. और हमारे पास की थी, right? So here you can see कि क्या आ रहा है, देखो. Let's just compare. We had BBV as the our first characters, and here you can see कि BBV थे first characters. So did you understand कि कैसे visionary cipher से encryption करना है? Yes. Okay. Everyone is clear क्योंकि ये थोड़ा complex cipher था, तो I think so I should ask about this. Is everyone clear? Yeah. Okay, thank you for clearing up. This is my plain text and this would be the encrypted text and this would be the key. I hope everyone is clarified how we are doing it. Yes. Okay. How we are doing it and this is the encrypted text. So हमें just इस table को हमको feature करना है और we have to just look at this table and we have to look at the row and the column and the corresponding cell and that cell would be our letter. Okay. So that is how completely visionary cipher works. Okay, now let's okay, let's take a look at hill cipher. Okay, अभी हिल साइफर आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है. आपको लीनियर अलजेब्रा के बारे में पता है? Everyone knows about linear algebra. Can you solve this equation? If I tell you, can you solve this equation? चैट बॉक्स देखिए, मैंने एक इक्वेशन भेजी है, क्या आप ये सॉल्व कर सकते हैं? कैन एनीवन रिप्लाई? Yes. Okay, can you tell me what is the value of x? 7. Okay, आपको कैसे मिला x? मतलब आपने क्या कंसेप्ट यूज किया x लाने के लिए? 42 minus 7 by 5. Perfect. So that is the concept of linear algebra. Okay, if I try to tell you in simple terms, do you agree? Hello. Yes. Okay. Does everyone else agree कि linear algebra क्या होता है? आपको समझ में आ रहा है ना? Yes. Okay. तो linear algebra is clarified. तो linear algebra, hill cipher एक ऐसा cipher था जिसमें linear algebra का use हुआ था. Okay. Hill cipher comes in advanced information security or advanced cyber security. So we won't be taking up hill cipher in this webinar. But you just need to know कि hill cipher एक cipher था जिसमें linear algebra का use किया था, and it is pretty secure cipher. आज भी बहुत use करने में आता है. Everyone clear about hill cipher? We are not going to learn what is hill cipher in detail. Is it okay? Yes. Okay, let's go ahead. So now comes rail fence cipher. Okay, rail fence cipher is an important cipher. हमने दो types के cipher देखे थे. Can you tell me what were the two types of cipher? Okay, we looked at two types of cipher, that were permutation cipher and the substitution cipher. Okay, but what we have looked at till now is just the substitution ciphers. Okay, हमने अभी तक permutation cipher के बारे में तो कुछ देखा ही नहीं है. So now this rail fence cipher is our first permutation cipher. Let's see how permutation ciphers or how the rail fence cipher works. I'll show you the same using an example. Okay, so give me any number. Give me any number between 1 to 5. I think so. Yes, 1 to 5 के बीच में कोई भी number दे दीजिए मुझे. 4. Okay, 4 is the number that we are taking. Okay, and the message that we will be encrypting is, this is rail fence. Okay, so this is the message that we will be encrypting and the number that we have is 4. अब क्या करना है कि इस मैसेज का जो हर एक कैरेक्टर है उसको हम डायगनली लिखेंगे इस एक्सेल शीट में. So the first would be T, next would be H, okay, then I have I, then I have S. Okay, but ऐसे डायगनली कहाँ तक जाना है? तो जहां तक हमारे पास जो नंबर है उतनी डेप्थ तक.
So now here you can see that we have went 4 units down the down into the depth. Okay. So now we will stop and then we will start going upwards. So now I'll go over here. This is S, R. Okay. Did you guys understand कि मैंने कैसे लिखा है? Yes. Okay. Anyone has a doubt कि मैंने किस तरह से लिखा है? तो I will explain it once again. Please explain. Okay, I'll explain it once again. तो हमारे पास ये मैसेज है, okay, कि this is rail fence and we need to encrypt this, okay? We got a key as 4. अभी आपको डेप्थ समझ में आता है ना? डेप्थ क्या होता है? Yes. Okay, if I am choosing this 4 blocks, okay, तो हमारी डेप्थ हो जाती है 4. Do you understand that? ओके, आई होप सो कि आपको इतना समझ में आता होगा कि इस तरह से मैं अगर 4 Yes. ब्लॉक्स चूज कर रहा हूँ तो उसकी डेप्थ हो जाती है 4. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं डायगनली हमारे हर एक कैरेक्टर को लिखूंगा, THISISRAILFENCE, हर एक कैरेक्टर को मैं डायगनली लिखूंगा. ओके, बट कहाँ तक? जहां तक हमारी डेप्थ सेटिस्फाई नहीं होती. सो यू कैन सी 1, हियर इट इज 2, हियर इट इज 3 एंड हियर इट इज 4. अंडरस्टूड? Yes. दिस कैसे लिखा वो समझ में आ गया ना? Yes. That's right. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू कि जब हम 4 कैरेक्टर्स लिख लिए हैं हमने और मतलब हम डेप्थ के मतलब बिलो सबसे बीनीथ पॉइंट पे पहुंच चुके, तब क्या करना है? तो नाउ वी विल गो डायगनली अपवर्ड्स. ओके, सो इस तरह से मैंने लिखा हुआ है. ऊपर भी हमको 4 ही स्टेप्स जाना है. ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. जो हमारे पास लास्ट में फोर्थ था वही हमारा नेक्स्ट में फर्स्ट होगा. 1, 2, 3 and 4. Now 1, 2, 3 and 4. 1, 2 and 3. Okay. Why I haven't returned the fourth blank over here? क्योंकि यहाँ तक हमारा मैसेज फिनिश हो जाता है. Does everyone understood कि कैसे किया हुआ है ये? Yes. और Yes. Understood. okay. Good. Now how we will write the message that first row जो होगी हमारे पास, okay, first row ये रही इतनी है. So we will write down this, then we will leave a space. फिर second row लिखेंगे. Right, this is my second row, so I will write down the second row. Yes. Then I'll write down the third row. Okay, and I'll write down the last row. तो इस तरह से ये जो मैसेज बनता है ना, जो encrypted message, that is my message that I will be sharing with the reader. Okay, is it clear कि encrypted message कैसे आया? Yes. Yes. Okay, thank you. encrypted message तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया. नाउ परम्यूटेशन साइफर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या कोई कह सकता है कि मैंने क्या बताया था? ओके, परम्यूटेशन साइफर की एक प्रॉपर्टी होती है कि एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग इन दिस प्लेन टेक्स्ट वुड बी रिपीटेड इन द एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट. यू कैन चेक इज दैट हैपनिंग और नॉट. कैन यू टेल मी दैट इट इज Yeah. हैपनिंग और नॉट? एग्जैक्टली, इट इज Yes, हैपनिंग. it is. Everything would be repeating in the in the encrypted text as well. So this is the rail fence cipher. Okay, is the rail fence cipher clear to you? Yes. Okay, so I think so that we can go ahead as well. Okay, as an example, there's nothing else. Okay, the next is columnar transposition cipher. Columnar transposition cipher is same as the rail fence cipher, and once again I will show it to you using एग्जाम्पल अगेन, क्योंकि आपको थियरी से बहुत कॉम्प्लेक्स थियरी होती है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाहता है. लेट्स गो अहेड. columnar transposition, here it is. So I'll take up
columnar transposition as my message. अभी रेल फेंस में की क्या थी, कोई मुझे कह सकता है रेल फेंस में हमने की क्या यूज की थी? Anyone can Four. tell? Yes, exactly. 4 was the key in rail fence cipher. जो डेप्थ थी वो थी हमारे पास की. ओके, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन में की हो जाती है कोई वर्ड, कोई रैंडम वर्ड. ओके, लेट्स से कि वर्ड ही हमारे पास की है, WORD जो लेटर है वही हमारे पास की है. ओके, नाउ इफ आई ट्राई टू रिप्रेजेंट वर्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो क्या हो जाता है? वी कैन से DORW. डज एवरीवन एक्सेप्ट मैं DORW क्यों लिख रहा हूँ? सबको समझ में आ गया? Yes. ओके, अभी हम क्या करेंगे कि इसको जैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिखा, वी विल लुक एट द फर्स्ट लेटर. फर्स्ट लेटर इज B. की में D की पोजीशन क्या है? 4 है. फोर्थ पोजीशन पे D है हमारे ओरिजिनल की में. Yes. Is it clear to everyone? Yes. Anyone if has a doubt then please ask me. आपको समझ में आ रहा है ना प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं अभी? Yes. Yeah. ओके, सो हम लोगों ने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है अभी. ओके, एंड हमारे पास फर्स्ट जो वर्ड है वो D एक फोर्थ पोजीशन पे है. सो वी विल राइट ओवर हियर एज 4. ओके, O is at the second position, R is at third and W is at 1. ओके, तो वर्ड जब मैं देता हूं तो हमारी की बन जाती है 4231. इज इट क्लियर टू एवरीवन की कैसे बनाई हमने? हेलो. Yes. Yes. Okay, now what we will do is that we will write out the key. मैं स्पेस लगा के की लिख रहा हूँ. ओके, and then we will write out the message in this formula COL. Go to the next row because हमारे keys अब खत्म हो चुके हैं. MNAR. So इस तरह से हम लिख सकते हैं कॉलमनर ट्रांसपोजिशन को. अगर मैं इस तरह के एक मैट्रिक्स में लिखना चाहूँ तो does everyone agree कि कॉलमनर ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्ली लिखा हुआ है मैंने? हेलो. Yes. Yes. सबको Sure. अग्री है ना? ओके, तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अप 1. कहाँ पे लिखा हुआ है मैंने? तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? 1 वाली कॉलम ये है, तो 1 वाली कॉलम मैं हाँ. पहले लिख दूंगा URNSO. ओके, देन आई विल राइट डाउन द 1 विथ 2. ओके, देन आई विल राइट डाउन विथ 3 एंड फाइनली द 1 विथ 4. तो ये जो लेटर, जो ये मैसेज बनता है वो हो जाता है मेरा एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट फॉर कॉलमनर ट्रांसपोजिशन. इज इट क्लियर? Yes. Yes. एवरीवन इज इट क्लियर कि एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट कैसे लाया मैंने? Yes. Clear. Okay. If you want me to explain it once again, then please tell me. I will explain it once again. Should I? Or should I go ahead? Yeah, you should go ahead. No, go ahead. Go ahead. Okay. Thank you. Okay. And then this is the last one, which is 6x6 Playfair cipher. Okay. We will understand what is the 6x6 Playfair cipher as well. Okay. So 6x6 मैं क्यों बोल रहा हूँ? 6 into 6 क्या होता है? First of all, can you tell me? 36. 36 होता है, right? अभी हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं? डज एनीवन रिमेम्बर? डज एनीवन रिमेम्बर कि हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26. परफेक्ट.
और नंबर्स कितने होते हैं 0 से 10 के बीच में, और 1 से 9, 0 से 9 के बीच में, या 1 to 10 के बीच में 10, 10 होते हैं। व्हाट इज 26 प्लस 10? 36. 36. इस पूरे बेसिस के ऊपर ये पूरा साइफर बनाया हुआ है कि 666 साइफर कैसे बनता है। ओके, सो लेट्स टेक अप अ मैसेज, लेट्स टेल कि ये मेरे पास मैसेज है। ओके, एंड आई हैव अ की एज चाइल्ड। ओके, मेरे पास चाइल्ड की है, और ये मेरा मैसेज है कि आई एम जस्ट किडिंग अराउंड। ओके, सो व्हाट आई विल डू कि सबसे पहले मैं सारे स्पेसेस हटा दूंगा। ओके, एज यूजुअल मैसेज जैसे ही हम ले रहे हैं ना, तो हमें हमेशा सारे स्पेसेस हटा देने चाहिए पहले। सो दिस इज माय न्यू मैसेज। ओके, दिस इज माय न्यू मैसेज। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इसको पेयर्स में डिवाइड कर दूंगा, वेर आई विल टेक अप ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम। ओके, सो लेट्स गो। इज इट क्लियर कि किस तरह से ये किया मैंने, मैसेज को डिवाइड किया? Yes. ओके, बट आई थिंक सो कि ये मैसेज में सारे एग्जांपल्स क्लियर इंक्लूड नहीं होंगे, तो मैं दूसरा मैसेज ले रहा हूँ। ओके, आई एम टेकिंग दिस मैसेज एज माय न्यू मैसेज, क्योंकि उस मैसेज में सारे एग्जांपल्स क्लियर नहीं होते थे। सो नाउ व्हेन आई एम डूइंग दिस, आई हैव this is the message. Sorry for changing the message once again. Okay. So अब हम देखते हैं कि मैसेज में क्या हो रहा है कि डबल एल आ रहा है, राइट? इज एवरीवन क्लियर कि डबल एल क्यों आ रहा है, मतलब मैंने क्यों डबल एल कहा? हेलो, कैन एनीवन रिप्लाई? Yes. ओके, तो Yes. जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए कि कपल में दोनों चीज सेम हो, ओके, डबल एल है, डबल ओ हो, डबल डी हो, ऐसा कुछ हो, तब व्हाट वी विल डू दैट वी विल पुट एन एक्स इन बिटवीन ओवर हियर। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि एक्स हम क्यों डाल रहे हैं। जब हम एनक्रिप्ट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि हमने एक्स क्यों डाला हुआ है। बट जस्ट रिमेंबर कि हम जैसे ही जब भी डबल आए चीज, तब वी विल पुट इन एक्स। ओके, अभी एक्स डाल दिया तो डबल ओ की सिचुएशन हट जाएगी, अपने आप ही हट जाएगी। नाउ आई विल सी कि जब मैं एंड कर रहा हूँ मैसेज, तब मेरे पास बस सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचता है, राइट? सिर्फ एस ही बच रहा है। सो वंस अगेन आई विल पुट एन एक्स ओवर हियर टू मेक दिस नंबर इवन। Is it clarified to all of you? Yes. Okay. Now how will we encrypt? तो जो की है हमारे पास, यहाँ पे चाइल्ड है की हमारे पास, राइट? तो व्हाट वी विल डू कि हम लोग चाइल्ड को सबसे पहले रो में लिख देंगे। सो व्हाट आई डू इज CHILND। ओके, अब मैं ए टू जेड के कॉलम्स, मतलब ए टू जेड के ही फॉर्म में यहाँ पे बाकी की चीजें लिख दूंगा, बट आई हैव टू टेक वन थिंग इन केयर। ओके, ए, नेक्स्ट इज बी। नाउ सी हमारे पास ऑलरेडी चाइल्ड में कवर अप हो चुका है, राइट? सो वी वोंट बी राइटिंग सी ओवर हियर। सिमिलरली डी भी हमारे पास चाइल्ड में कवर अप हो चुका है, तो वी वोंट बी राइटिंग डी ओवर हियर। ई नहीं कवर अप हुआ, एफ नहीं हुआ, जी नहीं हुआ, वंस अगेन एच हो चुका है तो एच नहीं लिखेंगे, आई भी हो चुका है, वो भी नहीं, जे, के, ओके, एल हो चुका है, एम नहीं हुआ,
the rest of the stuff is in. ओके, सबको समझ में आ गया कि ये मैंने कैसे फिलअप किया? Yes, yes. Okay, the rest of that would be filled up with 0 to 9. Okay, now what I will do कि मैं फर्स्ट दो चीजें लूंगा, आई और एच है हमारे पास. ओके, और यहाँ पे आई और एच को हाईलाइट करना है हमें. हाईलाइट किया मैंने. कैन यू टेल मी वन observation that you are getting in I and H when I am highlighting them? Anyone? यानी और कौशिक, कैन यू टेल मी कि कोई एक टाइप की ऑब्जर्वेशन आपको मिल रही है कि जब मैं आई और एच को हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर? ओके, आई विल जस्ट clear it up for you. I or H lay in the same row, right? You can see that. Mm. Hello. Yes. Yes. ओके, तो जब आई और एच सेम रो में हो तो क्या करने का कि उसके बाद वाला जो कैरेक्टर है उसके साथ उसको रिप्लेस कर दो. तो आई के बाद क्या है? एल है, तो वी विल रिप्लेस इट विथ एल. ओके, एच के बाद आई है, देन वी विल रिप्लेस इट विथ आई. नाउ लेट्स टेक अप ए एंड डी. ए एंड डी के केस में भी सेम हो रहा है. ए के बाद क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा. सो लेट्स जस्ट सिंपली पुट अप सी ए. नाउ taking 2 and R. Okay, this is okay over here. Can we highlight 2 and R like this? Hello. Is everyone getting? मैंने 2 और R को किस तरह से हाईलाइट किया हुआ है? We are forming a rectangle where 2 and R are opposite corners. समझ में आ रहा है कैसे किया है 2 और R को? हेलो. Okay, I'm sorry. I think so. मेरा इंटरनेट कनेक्शन के इश्यूज थे इसलिए. Okay, once again, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि I और H कैसे किया था? Yes. Yes. Okay. Now let's take a look at 2 and R once again. What we will do कि हम एक rectangle prepare करेंगे, okay, जिसमें 2 और R opposite corners पे है. I'll show you how to do that. Can you imagine this as a rectangle where 2 and R are on opposite corners? Everyone? Yes. Yes. Okay. Then can you tell me what are the other two corners of this rectangle? Q and 3. Perfect. Q and 3 are the opposite two corners of this rectangle. तो अब हम क्या करेंगे कि 2 के स्ट्रेट में क्या है? तो 2 के स्ट्रेट में Q है, right? So we will replace 2 with Q, and in the same case, when I'm choosing this, R के straight में है 3, then I'll replace R with a 3. Okay. Now let's take up E and D. जब मैं E and D लेता हूं तो एक again rectangle form हो रहा है. Then H and J would be replacing. आपको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ? हेलो. Yes. ओके. सो मतलब मैं अभी डायरेक्टली सभी रिप्लेस ही कर रहा हूँ इसलिए. Then BC and AK. So we have C and K over here. Okay, now you will be able to understand कि मैंने क्यों यहाँ पे LX लिया हुआ था. क्योंकि अगर LL होता तो यहाँ ना ही मेरे पास रो बनती, ना कॉलम बनती, ना रेक्टेंगल बनता, राइट? तो इसलिए मैंने LX किया था उधर. You can take any other letter instead of X, any letter that you wish. बट फिर हमेशा ये ध्यान रखना कि हमेशा वो लेटर सेम ही रहे जहाँ पे भी आप अंदर फिट कर रहे हो वहां पर. ओके, यूजुअली एक्स पिकअप करते इसलिए मैंने भी एक्स पिकअप किया. दिस वुड बिकम VA. Then we have LO. Here we have LO, so this becomes PI.
then we have N, and we have S and X. This is S and X. Okay, so here this becomes TS. ओके, तो हमारे पास जो पहला मैसेज था वो क्या था? आई हैड 2 रेड बलून्स, राइट? And we have this encrypted text is something that looks like this. I'll share it even on the chat box. तो इस तरह से हमारा ये मैसेज दिख रहा है. Just a minute. Did you all understand कि किस तरह से हम लोगों ने encrypt किया? Yes. Okay, so this was all for today. Like अभी तक के लिए तो आज के लिए तो इतना काफी है. We will look at some more modern timings होते हैं, मतलब modern type of ciphers है, modern type of encryption decryption systems है. वो सब हम कल देखेंगे. Okay, अभी तक के लिए हमारा इतना काफी है. We still have 20 minutes left, so I will tell you more about the CIA triad. Okay, is that okay with you guys? Yes. Yes. Okay. तो यू गाइस न्यू, मतलब सीआईए ट्रायड तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? सीआईए ट्रायड में क्या क्या होता है? Yes. ओके, कैन यू टेल मी सीआईए ट्रायड में क्या क्या चीजें होती है? Confidentiality, integrity, and accessibility. परफेक्ट. सबको याद है ना ये चीज, क्या भूल गए? याद है. Yes, I'll share this PPT as well. I'll share the PPT as well as the recording of the lecture. Okay, just a minute, I'll share my screen. Okay, so ये 3 चीजें आप लोगों ने बताई, ठीक है, सीआईए ट्रायड में होता है. अभी ये 3 चीजें है ना, इट वाज लाइक अंटिल 1990s और 1980s तक सीआईए ट्रायड में, मतलब ऐसा समझ में आता था कि सिक्योरिटी के लिए ये 3 चीजें इनफ है. 2000s में एक नया कंसेप्ट आया, which I think so you also agree कि ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, ये दोनों नए कंसेप्ट्स ऐड किए गए एज बेस ऑफ सीआईए ट्रायड. Can anyone tell me what is authorization and authentication? Anyone? आपको आइडिया है ऑथराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? Anyone? ध्यानी? Means any file that that authorized person can see. Okay, actually I'll explain you what is authorization with an example. Okay, आप में से कॉलेज में कौन कौन लोग हैं? You can raise your hands. या फिर कॉलेज एटलीस्ट आपने विजिट किया हुआ हो एक बार या उस तरह से? ओके, सो वी कैन से कॉलेज में आप जब अंदर जाते हो तब आपके कॉलेज के बाहर वो सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है, राइट? जो आपके पास आईडी कार्ड मांगता है. होते हैं ना, सभी के कॉलेज में होते हैं वो, आई गेस. Yes. Yes. हाँ, तो सभी के कॉलेज में वो बंदा होता है, ये वो सिक्योरिटी वाला होता है जो आईडी कार्ड मांगता है. सो व्हेन ही आस्क्स यू फॉर आईडी कार्ड, ही आस्क्स फॉर ऑथराइजेशन. कि जब आप अपने आप को, या जब आप किसी को पूछो कि तुम अपने आप को प्रूव करो, ओके, व्हेन आई आस्क यू टू प्रूव योरसेल्फ, आई एम आस्किंग यू टू ऑथराइज योरसेल्फ. ओके, और ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि जब आपने आपको प्रूव करो, तो आप जब आईडी कार्ड दिखाते हो तब आप ऑथेंटिकेट करते हो. ओके, और जब सिक्योरिटी वाला आपके पास आईडी कार्ड मांगता है तब वो आपको ऑथोराइज करता है. आर बोथ द टर्म्स क्लियर नाउ? Yes. Okay, everyone, is it are both the terms clear right now?
authentication and authorization. So if we are looking at an overview, दोनों चीजें सेम ही है, but when we are looking at a depth, okay, आप हम जब समझने के लिए देखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ऑथोराइजेशन एक अलग पार्टी के लिए होता है और ऑथेंटिकेशन एक अलग पार्टी के लिए होता है. Okay, understood, clarified about this thing? Yeah. Hello. Okay, so ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन आज के वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. You can see my browser right now, right? Yes. Okay. Yes. Can you give me any website? कोई भी वेबसाइट आप बताओ. Ticker tape. Let's go to ticker tape. Okay. Now when I visit this website, okay, or when I visit ticker tape, okay, you can see कि यहाँ पर एक लॉक बनाया हुआ आ रहा है, right? Everyone can see this lock. Yes. Okay, when you will press this lock, you will see the connection is secure. I'll just show you. And when I see where the connection is secure, here they have said your information, for example, passwords or credit card numbers is private when it is sent to this site. Okay, so ये जब tickertip.com पे हम जाते हैं या tickertip.in पे हम जब जाते हैं तब हमारा connection secure and they are also telling that certificate is valid. So you can see the details about the certificate and everything. tickertip.in पे मैं जब गया तब सर्टिफिकेशन मैं उसके पास मांग रहा हूँ. ओके, जब या तो फिर मेरा ब्राउजर जब tickertip.in कह रहा है कि मुझे tickertip.in एक्सेस करना है तब मेरा ब्राउजर उसके पास अपना सर्टिफिकेट मांगता है. सर्टिफिकेट क्या होता है कि ये tickertip.in वाली जो वेबसाइट है ना, that tells my browser that it is a legitimate website. Do you understand what I tried to tell you? Hello. Yes. Okay. When my browser is asking for a certificate to this website, then this website provides its certificate and it tells that I am a legitimate website. Okay. I'm not like it is secure, it is safe for you to visit this website. Okay. So जब ये वाला लॉक वाला सीन आता है ना यहाँ पर, so that means that it is secure to access this website. I'll show you one another website. नहीं ये वाला भी सिक्योर ही है, सिक्योर कर दिया इन लोगों ने एक्चुअली. जस्ट साइट्स. they have made actually all this website secure वरना पहले ये सब इनसिक्योर वेबसाइट्स थे. नहीं सब कुछ इन लोगों ने सिक्योर ही कर दिया है. Okay, any one of you have visited websites जहाँ पर मतलब एक caution का symbol दिखाता है बाजू में? Yes. I think so most of you would have visited क्योंकि अभी जो सारे websites मैंने shortlist किए थे वो सारे websites इन लोगों ने secure कर दिए. So I am not able to find a new website और इस तरह से मतलब randomly कोई website ढूंढना तो tough रहता है. अगर मेरे spam में कोई website मिल जाए वैसा. Let's see. Okay, most of these websites जो मैं पहले मैंने shortlist किए हुए थे वो सारे websites इन लोगों ने actually अभी secure कर दिए. ये वाला शायद से भी नहीं हो सकता है. ये भी secured है. Just a minute. इसमें शायद से मैं ढूंढ सकता हूँ कोई insecure website.
आई एम सॉरी, मैं अभी इनसिक्योर वेबसाइट्स तो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आई डू वन थिंग कि मैं इनसिक्योर वेबसाइट्स ढूंढ के आपके इनसिक्योर वेबसाइट्स और इस तरह के वेबसाइट्स की जो आपके पीसी को हार्म ना करे, उस तरह के वेबसाइट्स ढूंढ के मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करूंगा. यू कैन लाइक विजिट दोस वेबसाइट एंड यू कैन चेक आउट why the website is insecure, because right now I'm not able to find any kind of insecure websites. I did try, but मैंने जो सारे सेव किए हुए थे वो सारे वेबसाइट्स अभी इन लोगों ने सिक्योर कर दिए हैं. So they were bought certificates for the same. So I think so. आपको ये तो समझ में आ गया ना कि सर्टिफिकेशन कैसे यूज करते हैं? Yes. Everyone? Okay. So I think so. Let's keep it till over here today. We will continue from tomorrow. Continue at 6 p.m. tomorrow onwards. Okay. Another thing, like, do you guys only want to attend from 6 to 8 and Saturday, Sunday, or is it possible for every day? Every day will be possible, but after 7 or 8 p.m. Okay, so I need to check my schedule क्योंकि शायद से मैं अगर possible कर सकता हूँ 6 to 8 p.m. every day, then I might, but I think so. Like, let's come on, let's keep it till Saturday, Sunday only. That's much more better. Okay, I hope everyone had understood and everyone had a good day. Okay, everyone had a good lecture over here. कुछ भी kind of doubt हो आपको, then please feel free to contact me. Okay, I have shared my email ID. I'll share it once again to all of you. And I'll share it even on the WhatsApp group as well. Okay. So this is my email ID and you all have my WhatsApp number as well. If you have any kind of doubts, feel free to contact me. Another thing that I wanted to tell you कि मैं आपको संडे को शाम को अपना क्लास खत्म होगा उसके बाद एक असाइनमेंट दूंगा एंड आई होप कि आप सब लोग थर्सडे इवनिंग तक वो असाइनमेंट मेरे को सबमिट कर दोगे. ओके, इट वोंट बी अ ह्यूज असाइनमेंट. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट spare probably half an hour. Okay, and you will be able to do that assignment easily. और अगर उस assignment में अभी आपको किसी type का doubt हो, then feel free to contact me. Lectures में किसी भी type का doubt हो तो feel free to contact me. I will be uploading the recording of this lecture and I will be uploading the PPT as well as for the notes. So you all can access the material and you all can prepare for any kind of interviews or stuff that you want to do. Okay, I hope everything is clear. So should we end this meeting?